और त्रिवेणी के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रेवा लॉज, रोहित लॉज और ज्योति लॉज के समन्वय से बंधाई त्रिवेणी आज और एक नए चैप्टर पे कर रहा है। मैं श्वरन भाई को रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया यूनिवर्सल प्रेयर करके ये सभा का शुभारंभ करें। Namaste everyone. Let us begin with the universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden O light, hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels feels himself himself one as with thee. one with thee. know he is also one with every other. No, he is He is also also one with every other. other. Shanti, Shanti, Shanti. धन्यवाद हर्षवर्धन भाई। तो आज का हम जो आज के प्रीतम जी एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मेडिटेशन एंड इनर प्रैक्टिस। इसका हिंदी और मराठी में अनुवाद होगा। तो भाग एक के लिए मैं प्रीतम जी को बुलाऊं इंग्लिश में बोलने के लिए, उसके पहले उनका छोटा सा परिचय। प्रीतम जी, आप एक आपका सत्यम थियोसॉफिकल सेंटर गोवा के आप अध्यक्ष हैं। आप शिव गुरु पिरामिड मेडिटेशन सेंटर गोवा के समन्वयक भी हैं। आपका जीवन का उद्देश्य है कि ध्यान सीखना और सिखाना, व्यावहारिक जीवन के संतुलन के साथ साथ सत्य ज्ञान की और आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना। आप 24 सितंबर 24 से थियोसॉफी के सदस्य बने हैं और आप बहुत ही अभ्यासु हैं और थियोसॉफी और इतर विषयों में आपका अभ्यास जारी है। तो प्रीतम जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी मेडिटेशन एंड इनर प्रैक्टिस पार्ट 1 इन इंग्लिश। स्वागत है। धन्यवाद. Thank you, Archana ji. Thank you for introduction. Thank you for everyone here who are come here. And in one word, I can say, this what is everything is going through by intuition. So please, I request you to listen as a soul, not a by name wise. Meditation and inner practices, or we can say discipline also. Part 1. My voice is clear, sir? Taralji? Loud and clear. Please go ahead. Okay, thank you. Purpose of inner practice or discipline, we can say. According to theosophical understanding, a human being is not merely a physical body. A person is a combination of body, mind, intellect, and soul. The journey of life is gradual evolution of consciousness toward higher wisdom. The ultimate goal of this journey is self-realization, universal love, and service to humanity. In Theosophy, meditation and inner discipline or practices are considered essential practices for contacting the higher self. Inner discipline means turning attention away from the outer world for a short time and directing it towards the inner world of consciousness. Through this process, the mind becomes calm, thoughts become purified, and the individual begins to feel the presence of higher spiritual awareness. Theosophists often emphasize that true wisdom is not obtained merely from books, it arises from direct inner experience. Within every
human being, there exists a divine spark. This inner light guides a person toward truth, compassion, and selfless service. Meditation helps awaken this inner light. When the mind becomes quiet, the voice of the inner self becomes clearer. In many spiritual traditions, this guiding principle is called the inner teacher. So, method of meditation. So page 2, method of meditation. The theosophical approach to meditation is simple, natural, and balanced. It does not require complicated rituals or strict external practices. 1. Sit in silence. Sit comfortably with the spine straight. Allow the body to relax while remaining alert. Gently close the eyes. 2. Awareness of breath. Observe the natural rhythm of breathing. Slow and steady breathing helps calm the mind and brings attention to the present moment. 3. Purification of thought. Let go of negative emotions such as anger, fear, or resentment. Replace them with thoughts of peace, goodwill, and harmony. 4. Awareness of inner light. Imagine a subtle light within the heart or between the eyebrows. This light symbolizes the spiritual consciousness within every human being. Unity with humanity. 5th is unity with humanity. Expand the awareness beyond oneself. Feel connected with all living beings and send thoughts of peace and goodwill to the world. In Theosophy, meditation is not only for personal peace. Its deeper aim is to develop compassion, wisdom, and responsibility toward the welfare of humanity. The third eye and teaching of the masters. Many spiritual traditions speak about the third eye, which is symbolically associated with the intuitions and higher perception. It represents the awakening of inner awareness beyond ordinary intellectual thinking. According to teaching often discussed by theosophists. Discussed by theosophists, the true spiritual knowledge is perceived through intuition, not merely through physical senses. Awakening of inner perception requires purity of life. Awakening of inner perception requires purity of life, calmness of mind, and selfless services. Meditation and self-reflection gradually refine the consciousness. The masters of wisdom are often described in theosophical literature as highly evolved spiritual teachers who guide humanity's spiritual progress. Their teachings emphasize that every human being possesses divine potential. When a person reduces selfishness, develops compassion, and works for the welfare of others, the inner faculties of intuition begin to unfold. In this process, the individual gradually experiences deeper truths about life
and consciousness. Thank you. थैंक यू। बहुत ही शॉर्ट एंड एनलाइटिंग और डिटेल आपने इंग्लिश में प्रेजेंट किया। अब मैं सर, कौस्तुभ हैज नॉट येट ज्वाइन, तो क्या मैं इनको हिंदी में पहले बोलने को बोल सकती हूँ सर? मैंने डाल दिया। जी। तो मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगी सिमी जी को, जो इस पार्ट 1 का हिंदी में बोलेंगी। तो उसके पहले सिमी जी का एक छोटा सा परिचय। सिमी सावलानी जी, आप सॉरी, एक मिनट तक। सिमी अशोक सावलानी जी, आपने बीकॉम और एलएलबी किया है। आप सर्टिफाइड प्राणिक हीलर भी हैं। आपने बेसिक प्राणिक हीलिंग कोर्स तक किया है। आप डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी रही है प्राणिक हीलिंग लायंस क्लब की, और 3rd वाइस प्रेसिडेंट भी है लायंस क्लब ऑफ मुंबई मलाठी। आपने फर्स्ट प्राइज भी इंटर कॉलेज कंपटीशन में क्रिएटिव राइटिंग में ज्वाइन किया है। और आप ज्योति लॉज की मेंबर हैं, थियोसॉफी में भी इंटरेस्ट रखती हैं, और एक ट्रांसलेटर की तरह भी बहुत अच्छी तरह से उभर रही है। तो आपका स्वागत है। हिंदी में मेडिटेशन एंड इनर प्रैक्टिस, ध्यान और आंतरिक साधना का पार्ट 1 प्रस्तुत करें। स्वागत है। Voice is आपका not. आवाज नहीं आ रहा है? सिमी जी, आपका आवाज नहीं आ रही है। नहीं। अभी आप म्यूट हो गए। अभी आ रही है? हाँ, अब ठीक है, लाउड एंड क्लियर। Once again, thank you for the wonderful introduction. ध्यान और आंतरिक साधना, भाग 1, पृष्ठ 1। आंतरिक साधना का उद्देश्य। थियोसॉफी के अनुसार मनुष्य केवल एक भौतिक शरीर नहीं है, वह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक समन्वित अस्तित्व है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य चेतना का विकास करते हुए आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है आत्मबोध, सार्वभौमिक प्रेम और मानवता की सेवा। थियोसॉफिकल परंपरा में ध्यान और आंतरिक साधना को आत्मा से संपर्क स्थापित करने का मुख्य साधन माना जाता है। आंतरिक साधना का अर्थ है कुछ समय के लिए बाहरी संसार से ध्यान हटाकर अपने भीतर की चेतना की ओर मुड़ना। जब मनुष्य भीतर की ओर ध्यान देता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचार शुद्ध होते हैं और व्यक्ति अपने उच्चतर स्वरूप का अनुभव करने लगता है। थियोसॉफिस्ट मानते हैं कि वास्तविक ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि अंतरानुभव से उत्पन्न होता है। हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य ज्योति होती है। यह ज्योति उसे सत्य, प्रेम और सेवा की ओर प्रेरित करती है। ध्यान के माध्यम से यह आंतरिक प्रकाश धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है, तब व्यक्ति अपने आंतरिक गुरु या उच्च चेतना का अनुभव कर सकता है। पृष्ठ 2, ध्यान की पद्धति। थियोसॉफिकल मार्ग में ध्यान सरल और प्राकृतिक माना गया है। इसमें जटिल विधियों की अपेक्षा मन की शुद्धता और जागरूकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। पहला क्रम है शांत बैठना। आरामदायक स्थिति में सीधे बैठे, शरीर को स्थिर रखें और आंखें धीरे धीरे बंद करें। दूसरा, श्वास पर ध्यान। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। श्वास की लय पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होने लगता है। तीसरा, विचारों की शुद्धि। क्रोध, भय और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें।
मन में शांति, सद्भाव और प्रेम के विचार उत्पन्न करें। चौथा, आंतरिक प्रकाश का अनुभव। अपने हृदय में या भ्रूम मध्य आईब्रोज के बीच में, दोनों बाहुओं के बीच एक दिव्य प्रकाश की कल्पना करें। यह प्रकाश आत्मा का प्रतीक है। पांचवा, विश्व के साथ एकता। अपने मन में यह भावना उत्पन्न करें कि आप समस्त मानवता और समस्त जीवों से जुड़े हुए हैं। सबके लिए शांति और मंगल की कामना करें। थियोसॉफी के अनुसार ध्यान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शांति नहीं है, बल्कि मानवता के प्रति करुणा, प्रेम और सेवा की भावना विकसित करना है। पृष्ठ 3, तीसरी आंख और मास्टर्स की शिक्षाएं। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में भ्रूमध्य को तीसरी आंख, थर्ड आई कहा जाता है। यह अंतर्ज्ञान, उच्च चेतना और आंतरिक दृष्टि का प्रतीक माना जाता है। थियोसॉफिकल विचारधारा के अनुसार वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान बाहरी इंद्रियों से नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान से प्राप्त होता है। तीसरी आंख का जागरण शुद्ध जीवन, शांत मन और निस्वार्थ सेवा से संभव होता है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से चेतना धीरे धीरे परिपुष्ट होती है। थियोसॉफिकल साहित्य में वर्णित मास्टर्स ऑफ विजडम के अत्यंत विकसित आध्यात्मिक शिक्षक माना जाता है, जो मानवता के आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं। उनकी शिक्षाओं का मुख्य संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर दिव्यता मौजूद है। जब व्यक्ति स्वार्थ को कम करता है, करुणा विकसित करता है और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तब उसकी आंतरिक शक्ति और अंतर्ज्ञान जागृत होने लगता है। भाग 2। एक भाग 2 के लिए आपको वापस आएंगे। धन्यवाद सिमी जी, बहुत ही सरल हिंदी में आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कौस्तुभ काम्बेकर जी को, जो यही व्याख्यान का मराठी में भाषांतर बताएंगे। और उससे पहले उनका छोटा सा परिचय। कौस्तुभ काम्बेकर एक अर्थशास्त्र के स्नातक हैं। आप अभी नवी मुंबई में रहते हैं। आप एक निजी बैंक में एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, और आप एक वैश्विक शेपर भी हैं, जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक युवा पहल है। आप थियोसॉफी में सेकंड जनरेशन थियोसॉफिस्ट है। आपके पिताजी से आप प्रेरित होकर आपने थियोसॉफी ज्वाइन करी, और अभी आप ऐसे नए हैं तो आप अभी खोज और सीख रहे हैं। और ज्योति लॉज के युवा मेंबर हैं, जो बहुत ही अच्छे से भाषांतर करते हैं। और तो कौस्तुभ जी, आपके लिए मंच हाजिर है। आपका स्वागत है। मराठी में पार्ट 1, ध्यान और आंतरिक साधना। धन्यवाद अर्चना जी। मैं शुरू करता हूँ। बीच में अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी रहेगी तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ध्यान तो मैं मराठी में आज इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। ध्यान आणि आंतरिक साधना। आंतरिक साधनेचा उद्देश। थियोसॉफीच्या मार्गानुसार मनुष्य केवळ शरीर नाही, तो शरीर, मन, बुद्धी आणि आत्मा यांचा एक समन्वित प्रवास आहे। या प्रवासाचा अंतिम उद्देश म्हणजे आत्मज्ञान, सार्वभौम प्रेम आणि मानव सेवा। थियोसॉफिकल परंपरेत ध्यान आणि आंतरिक साधना हे आत्म्याशी संपर्क साधण्याचे प्रमुख साधन मानले जाते। आंतरिक साधना म्हणजे बाह्य जगापासून थोड्या वेळासाठी दूर जाऊन आपल्या अंतर्मनाशी संवाद साधणे। या प्रक्रियेत मन शांत होते, विचार शुद्ध होतात आणि व्यक्ती स्वतःच्या उच्च चेतनेशी जोडली जाते। थियोसॉफिस्टांच्या मते खरे ज्ञान पुस्तकातून नाही तर अनुभवातून येत आहे। ध्यान म्हणजे त्या अनुभवाकडे जाणारा मार्ग आहे। मनुष्याच्या आत एक दिव्य चेतना आहे, जी त्याला सत्य, प्रेम आणि सेवा याकडे मार्गदर्शन करते।
ध्यानाच्या माध्यमातून ही चेतना अधिक जागृत होते. जेव्हा मन शांत होतो तेव्हा अंतर्मनातील प्रकाश दिसू लागतो. आज काही परंपरामध्ये आंतरिक गुरु असं म्हटलं जाते. तर ध्यानाची पद्धत काय पाहिजे? थिओसॉफिकल मार्गावर ध्यान अत्यंत आरामदायक स्थितीत बसून स्थिर करणे, डोळे हलकेच बंद करणे, श्वासावर लक्ष केंद्रित करणं, हळूहळू श्वास घेणे आणि सोडणे. श्वासाची जाणीव मनाला वर्तमान क्षणात आणते. मन शुद्ध करणे, सर्व नकारात्मक विचार दूर करून मनात शांतता आणि प्रेमाची भावना आणणे. आंतरिक प्रकाशाची अनुभूती आपल्या हृदयात किंवा भ्रूमध्यात एक तेजस्वी प्रकाश आहे असं अनुभवते. हा प्रकाश आत्म्याचं प्रतीक आहे. विश्वाशी एकात्मता स्वतःला संपूर्ण मानवतेशी आणि विश्वाशी जोडलेलं अनुभवते. थिओसॉफिकल विचारधारेनुसार ध्यानाचा उद्देश केवळ व्यक्तिगत शांतता नाही, तर संपूर्ण मानवतेसाठी प्रेम आणि करुणा विकसित करणे आहे. थर्ड आय मास्टर्स आणि थिओसॉफिस्टांचे विचार याच्यावर काय आहे? अनेक आध्यात्मिक परंपरांमध्ये भ्रूमधल्या तिसरे नेत्र किंवा थर्ड आय असं म्हटलं जातं. हे ज्ञान, अंतर्ज्ञान आणि उच्च चेतनेचे केंद्र मानलं जाते. थिओसॉफिस्टांच्या मते तिसरे नेत्र जागृत होणं म्हणजे व्यक्तीची अंतर्ज्ञानाची विकास होणं असते. थिओसॉफिकल परंपरेतील काही गुरु आणि अर्चना यांनी सांगितले आहे की आचार्यांनी सांगितले आहे की खरे आध्यात्मिक ज्ञान बाह्य डोळ्यांनी नव्हे तर अंतर्ज्ञानाने दिसते. तिसरे नेत्र जागृत करण्यासाठी शुद्ध जीवन, शांत मन आणि निस्वार्थ सेवा आवश्यक आहे. ध्यान आणि आत्मचिंतन हे या जागृतीचे मुख्य साधन आहेत. मास्टर्स ऑफ विजडम यांचं मत असे आहे की मानव जात एक आध्यात्मिक प्रवासावर आहे. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये दिव्य शक्ती आहे. जेव्हा मनुष्य आपल्या स्वार्थावर विजय मिळवतो आणि मानवतेची सेवा करतो, तेव्हा त्याचे अंतर्ज्ञान विकसित होते आणि त्याला सत्याचा अनुभव येतो. याच्यासोबत पहिला भाग संपतो इथे. थैंक यू कौस्तुभ, आपने भी बहुत ही सरल मराठी में और बहुत शांत स्वभाव से बताया. तो प्रीतम जी, मैं अभी आपको फिर आमंत्रित करना चाहूंगी पार्ट 2 मेडिटेशन एंड इनर प्रैक्टिस का इन इंग्लिश. और आपका स्वागत है. Thank you. Thank you, Archana ji. Thank you. Part 2, Sessions for Theosophist. Now page 1. Who is a Theosophist? A Theosophist is a seeker of truth who recognizes the unity underlying all religions and philosophies. The aim is not to promote one belief system, but to discover the universal wisdom present in all spiritual traditions. The Theosophical movement emphasizes that every human being is an immortal soul evolving through many experiences in life. Growth occurs through knowledge, ethical living, and service. Three guiding principles often emphasizes are universal brotherhood. Humanity is one family beyond distinctions of race, religion, gender, or nationality. Second, study of wisdom
traditions, exploration of philosophy, science, and spiritual teachings from different cultures. Third, self-transformation, personal growth through inner discipline, reflection, and ethical living. For a theosophist, spiritual life is not separated from daily life. Every action becomes an opportunity for learning and self-improvement. A second, practices for a theosophist. A theosophist usually follows certain practices to support inner development, meditation, and self-observation. Spending a few minutes daily in silence helps observe thoughts and emotions. This develops awareness and inner balance. Study of spiritual wisdom. Reading and reflecting upon texts such as the Upanishads, Bhagavad Gita, Buddhist teaching, and theosophical literature deepens understanding. Third, selfless service. Helping others without expectation of reward is considered one of the highest forms of spiritual practice. Ethical living. Practicing truthfulness, compassion, self-control, and harmony is daily life, strengthens character and spiritual awareness. These practices gradually refine the mind and bring greater clarity of thought and purpose. Page 3. Final message for a theosophist. The essential message of theosophical tradition is that the divine potential exists within every human being. Spiritual progress does not depend on belonging to a particular religion. It depends on sincerity, ethical living, and dedication to truth. The teachings attributed to the masters emphasizes that the real path of spirituality includes search for truth, purity of thoughts and action, compassion for all living beings, service to humanity. When knowledge, love, and service are harmonized in life, spiritual evolution naturally unfolds. Through meditation, inner discipline, and selfless service, a person gradually becomes more aware of the higher self and contributes to the progress and harmony of humanity. Thank you. थैंक यू प्रीतम भाई, आपने बहुत ही पॉइंट वाइज, ज्यादा एलॉबरेट ना करते हुए टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट में नए नौसिखियों को भी काम आए ऐसे बहुत सुंदर से इंग्लिश में समझाए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कौस्तुभ जी को पार्ट 2 का मराठी में भाषांतर करें। स्वागत है आपका। तर थिओसॉफिस्ट म्हणजे कोण? थिओसॉफिस्ट म्हणजे असा व्यक्ती जो सत्याचा शोध घेतो,
सर्व धर्मातील एकता ओळखतो आणि मानवतेच्या सेवेला सर्वोच्च मूल्य मानतो. थिओसॉफिकल सोसायटीच्या तत्वानुसार प्रत्येक मनुष्य हा एक आध्यात्मिक आत्मा आहे जो अनेक जन्माच्या प्रवासातून शिकत असतो. थिओसॉफिस्टसाठी 3 प्रमुख तत्वे महत्वाची आहेत. युनिव्हर्सल ब्रदरहुड, सर्व मानव एकच कुटुंब आहेत. स्टडी ऑफ विजडम, प्राचीन आणि आधुनिक ज्ञानाचा अभ्यास. सेल्फ ट्रान्सफॉर्मेशन, स्वतःचा आंतरिक विकास. थिओसॉफिस्टचा जीवन मार्ग केवळ बौद्धिक अभ्यासावर आधारित नसतो, तो जीवनातील प्रत्येक कृतीतून आध्यात्मिकता व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतो. थिओसॉफिस्टसाठी साधना काय असते? एक थिओसॉफिस्ट आपल्या जीवनात काही मूलभूत साधना पाळतो. पहिलं, ध्यान आणि आत्मपरीक्षण. दररोज काही वेळ शांत बसून स्वतःच्या विचारांचे निरीक्षण करणे. दुसरा, ज्ञानाचा अभ्यास. उपनिषद, भगवद्गीता, बुद्धाचे उपदेश आणि थिओसॉफिकल साहित्य यांचा अभ्यास करणे. तिसरं, निस्वार्थ सेवा. मानवतेच्या कल्याणासाठी कार्य करणे. सेवा ही आध्यात्मिक प्रगतीचा सर्वात महत्वाचा मार्ग आहे. चौथा, नैतिक जीवन. सत्य, अहिंसा, संयम आणि करुणा या गुणांचे पालन करणे. आता थिओसॉफिस्टसाठी अंतिम संदेश काय आहे? थिओसॉफिकल परंपरेचा मुख्य संदेश असा आहे की प्रत्येक मनुष्य स्वतःच्या आत असलेल्या दिव्य शक्तीला जागृत करू शकतो. यासाठी कोणत्याही विशिष्ट धर्माची गरज नाही, फक्त प्रामाणिक शोध, शुद्ध जीवन आणि मानवतेसाठी प्रेम आवश्यक आहे. मास्टर्स ऑफ विजडम म्हणतात की मानवाचा खरा धर्म म्हणजे सत्याचा शोध आणि मानवतेची सेवा. जेव्हा मनुष्य आपल्या जीवनात ज्ञान, प्रेम आणि सेवा या 3 तत्वांचा समन्वय करतो, तेव्हा त्याचा आध्यात्मिक विकास वेगाने होतो. थिओसॉफिस्टसाठी मार्ग स्पष्ट आहे. ज्ञानाची शोध घ्या, मन शुद्ध ठेवा, सर्व प्राणी मात्रांवर प्रेम करा आणि मानवतेची सेवा करा. अशा प्रकारे ध्यान, आंतरिक साधना आणि सेवा यांच्या माध्यमातून मनुष्य स्वतःच्या उच्च चेतनेशी एकरूप होऊ शकतो. धन्यवाद. धन्यवाद कौस्तुभ. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सिमी जी, आप पार्ट 2 हिंदी में प्रस्तुत करें, ध्यान और आंतरिक साधना. भाग 2, एक थियोसॉफिस्ट के लिए सत्र. पृष्ठ 1. थियोसॉफिस्ट कौन है? थियोसॉफिस्ट वह व्यक्ति है जो सत्य की खोज करता है और सभी धर्मों के पीछे छिपी एकता को समझने का प्रयास करता है. इसका उद्देश्य किसी एक धर्म का प्रचार करना नहीं, बल्कि सर्वव्यापी ज्ञान, यूनिवर्सल विजडम को समझना है. थियोसॉफिकल दृष्टिकोण के अनुसार हर मनुष्य एक अमर आत्मा है जो अनेक अनुभवों और जन्मों के माध्यम से सीखती और विकसित होती है. थियोसॉफिकल जीवन के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं. पहला, सार्वभौमिक बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड. सभी मनुष्य एक ही परिवार के सदस्य हैं. दूसरा, ज्ञान का अध्ययन, स्टडी ऑफ विजडम. विभिन्न धर्मों, दर्शन और विज्ञान का अध्ययन. तीसरा, आत्म परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. अपने भीतर नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना. थियोसॉफिस्ट के लिए आध्यात्मिकता केवल अध्ययन तक सीमित नहीं होती, यह दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में प्रकट होती है. पृष्ठ 2, थियोसॉफिस्ट के लिए साधनाएं. एक थियोसॉफिस्ट अपने जीवन में कुछ मूलभूत अभ्यासों को अपनाता है.
ध्यान और आत्म परीक्षण। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन। उपनिषद, भागवत गीता, बुद्ध के उपदेश और थियोसॉफिकल साहित्य का अध्ययन। तीसरा, निस्वार्थ सेवा। दूसरों की सहायता करना और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना। चौथा, नैतिक जीवन। सत्य, अहिंसा, संयम और करुणा जैसे गुणों का पालन करना। ये अभ्यास धीरे धीरे व्यक्ति के मन और चरित्र को परिष्कृत करते हैं। पृष्ठ 3, एक थियोसॉफिस्ट के लिए अंतिम संदेश। थियोसॉफिकल परंपरा का मुख्य संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर स्थित दिव्य शक्ति को जागृत कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष धर्म में विश्वास आवश्यक नहीं है। आवश्यक है सत्य की खोज, शुद्ध जीवन और मानवता के प्रति प्रेम। मास्टर्स की शिक्षाओं के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग के 4 मुख्य आधार हैं: सत्य की खोज, विचार और कर्म की पवित्रता, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मानवता की सेवा। जब मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान, प्रेम और सेवा को संतुलित करता है, तब उसका आध्यात्मिक विकास स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ध्यान, आंतरिक साधना और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे अपने उच्चतर स्वरूप को पहचानता है और विश्व की शांति और प्रगति में योगदान देता है। इससे हमारा भाग 2 समाप्त होता है। धन्यवाद सिमी जी। अब मैं तीनों स्पीकर, प्रीतम जी जो मुख्य स्पीकर हैं और कौस्तुभ जी और सिमी जी से निवेदन करूंगी इस विषय के ऊपर कुछ आपके विचार आपको जो साझा करने हैं, जो इस वक्त आपको करना है। तो प्रीतम जी, मैं पहले आपको निवेदन करूंगी, आपको कुछ और कहना है? I spoken and बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया है, बहुत ही विचारशील। सिमी जी, आप या कौस्तुभ भाई कुछ कहना चाहें इस विषय पर, या आपके कोई विचार है? हाँ, तो इसमें एक ये था ना कि विश्व के साथ एकता, अपने मन में यह भावना उत्पन्न करे कि आप समस्त मानवता और समस्त जीवों से जुड़े हुए हैं। तो इसमें मैं हम लोग सत्संग में जाते थे, तब हमें सत्संग में बताया गया था कि एक वाक्य है, देख देख ऐसा देख, मिट जाए द्वि, रह जाए एक। जब द्वैत निकल जाएगा हमारे जीवन से, तो एकता ही रह जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। जी कौस्तुभ जी, आप युवा पर्सपेक्टिव कुछ देंगे इस बात को? हाँ, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। जी। सबसे पहले तो नीता सिंह जी ने मैसेज डाला है, तो उनके बेटे को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी आप विषय पर बोलिए, और चीजें बाद में होंगी सर। रिकॉर्ड ठीक चल रहा है, लोग अध्ययन करते हैं। डेफिनेटली। एक चीज, मतलब ऑब्वियसली मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है, स्पेशली सिंस जैसे अर्चना जी ने बोला फ्रॉम यूथ पर्सपेक्टिव। तो हमारा तो मतलब सबके लाइफ में स्ट्रेस है, बट द न्यू जनरेशन एम्फसाइजेस कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो वहाँ पे मेडिटेशन इज समथिंग विच कैन हेल्प आउट। एंड जैसे मैं बात कर रहा था इस टॉपिक पे, एक चीज़ जो मेरे ध्यान में आई वो हमारे यूथ कॉन्फ्रेंसेस से थी, जो अडियार और भवानी में हुई है अभी तक, जिसका मैं भाग रहा हूँ। एंड आई फील कि वहाँ पे मेडिटेशन हमने सोलो नहीं, ग्रुप में किए थे, जो और पावरफुल कर दिया था वो पूरे एक्सपीरियंस ने उस मेडिटेशन को। तो दिस इज जस्ट एन पर्सनल एक्सपीरियंस, बट जहाँ भी पॉसिबल है आप बाकियों को साथ में लेके और ग्रुप मेडिटेशन करेंगे तो आई फील कि वो पावर और
एनहांस होके मल्टीप्लाई हो जाती है. जस्ट अ पर्सनल एनेक्डोट, बट हाँ, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू कौस्तुभ फॉर शेयरिंग योर पर्सनल थॉट्स एंड विश. अभी किसी और को कुछ कहना, कोई? सिमी जी कहना चाह रही कुछ. जी सिमी हाँ जी. जी. हाँ, कौस्तुभ जी ने मेडिटेशन पे बात किया तो मेरे ध्यान में आया कि मैं एक प्राणिक हीलर हूँ, जैसे कि आपने बताया था. तो कल हम लोग एक कॉर्पोरेट में गए थे जहाँ पे उनको अभी 31 मार्च चल रहा है, तो सब बहुत स्ट्रेस में है. आप जहां भी जाओ ना, उनको सर उठा के देखने की फुर्सत नहीं है. पर उन्होंने वुमेन्स इंटरनेशनल डे के हिसाब से कल हम लोग को इनवाइट किया था. तो वहां पे मैंने उनको प्राणिक हीलिंग की ओरिएंटेशन दी, मेडिटेशन की ओरिएंटेशन दी, और उनको गारंटी दिया कि मेडिटेशन के बाद मैं आपसे सवाल करूंगी, आप मुझे जवाब देना. हमारी मेडिटेशन बहुत अच्छी तरह से हो गई. फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आपके मन में अब कितने विचार चल रहे हैं. हाथ ऊपर करिए जिनके मन में विचार चल रहे हैं. किसी का हाथ ऊपर नहीं उठा. वो मेडिटेशन के ब्लिस में थे, इतना सब भूल गए थे. तो मैं ऐसे कि कभी हम लोग का ऐसे ये वर्चुअल नहीं, ऑफलाइन मीटिंग होता है, तो आई वुड लाइक टू होल्ड वन सेशन फॉर डूइंग द मेडिटेशन. इट्स अ गाइडेड मेडिटेशन. आपको ओरिएंटेशन करके मैं बताऊंगी किस तरह से सिमी जी करना है. बिल्कुल करेंगे इसके लिए. आपने इस विषय पर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद. समय की सीमा रहती है इसमें, हम इसी के बाद बात करेंगे इसके ऊपर. जी मनसुख भाई, दुबल जी, शिंदे जी और हर्षवर्धन भाई कुछ कहें. मनसुख भाई अनम्यूट करिए. अच्छा, उनको कुछ नहीं कहना है. दुबल जी आप. दुबल जी. हाँ. Subject chosen by Mr. PRITAM is very interesting We because can't hear you. Voice is not clear. Voice is very low, the voice is there. subject chosen by PRITAM is always interesting, and today, most particularly, this is applicable in our day-to-day life. We normally separate these two things, meditation and daily life. But if we sit at particular place or doing our daily duties, we should also remember that we have to do the work with the three objectives of the Theosophical Society in mind. That the other person is also in unity, and then we have to do our own transformation in the third object, the same. So we should always concentrate at every activity that we do. We are not only the physical body, but even the other person is not only physical body, but we have to always consider that he is also Atma, a soul. So this way the meditation will help us in our daily activities, and we can get the desired results. And our life for the humanity and this TOS activities and other aspects of practical life will definitely be progress. It is said that we should land into the pathless land, so that we will be achieved by this meditation in the daily life. Thank you. धृवल जी. जी हर्षवर्धन भाई या शिंदे साहब या सुप्रिया जी, जो भी कोई कहना चाहे प्लीज. Let us listen to Shinde ji first. जी शिंदे जी. Shinde ji. Okay. Thank you. May I ask if anybody has got any question to ask? That is important. Any question is raised? Because both three people, they have studied and tried to put the theosophical teaching in front of us. If any queries or question is required, on that we can say. Otherwise, Sir, I am from Ballari. Yeah. Sir, please on your Wonderful. video. Please put your video on. Okay. चंद्रशेखर जी आपका वीडियो ऑन करिए. Yes. Okay.
Yeah, got it. Welcome, sir. Namaste ji. जी, Munshi ji. Namaste. Sir, wonderful arrangement you have done, sir. Really. I do not know Marathi. I can understand Hindi and I can understand English. Well explained by both the people. And I need meditational programs, sir. No doubt, you have explained well. Practice is very important. What do you say, sir? Yes. You have to at least how many hours you want to do meditation? सरल जी मैं कुछ बोल As per theosophical experience, how many hours or minutes you have to do? नहीं से नॉर्मली प्रैक्टिस तो हम डेली करते हैं. प्रीतम जी, शिंदे जी को आंसर करने यस दीजिए. यस Philosophical सर point of- ओवर टू शिंदे Yes. सर. सर आप बोलिए सर. ये ओवर टू यू सर. No, Pritam wants to tell, let him tell. नहीं सर, वो आपसे उन्होंने प्रश्न पूछा है चंद्रशेखर जी ने कि थियोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से मेडिटेशन करते हैं. यस यस जी जी जी. Oh. To make you clear to Chandrasekhar, as Yes, you sir. said rightly, you are leading the meditation. Yes, leading in the meditation is a group activity, I can say. Yes. But in true sense, it is good to do good activity and be asking people to sit for meditation, leading them rightly, observing silence, and thus forming the synergy, the total consciousness to bring together, and they try to make heart and mind together. That is what it happens in the 8 hours meditation in Vipassana. So in Vipassana, we do that one, group meditation. That is good. That is a kriya. But in true sense, we are speaking about dhyana is the term translated as meditation. So dhyana is the individual responsibility. And it is not a kriya. It is not done. It is not a lesson. It is not a teaching as well. Usually we say we are leading meditation, but meditation cannot be taught. Meditation cannot be done. It is a state of consciousness to arise to that level, which we name it as the dhyana. And the result of this, looking at the result of this, we say, yes, we have done dhyana, we have done meditation. What is that result we get? We change. If meditation is really occurring, of course, everybody goes to that meditative state through consciousness. And if it is a real practice to be silent and quiet and alone, ekanta, then perhaps you will see the result. You become gentler from the louder. So it makes us gentler and not the louder. We don't say very forcibly that this is the meditation. No, you just become gentle. You become humble and not superior, that I am doing meditation, etc. And also you become egoless and not egoistic. So this is the result of meditation. One can examine to oneself. But unfortunately, why meditation is required? Theosophy, it makes it very clear. Meditation is required because unless the mind becomes quiet, his consciousness cannot rise to that spiritual level where the state of meditation is attained. But unfortunately, human beings are selfish.
Everybody will accept this. We all are selfish, and we are conscious that we are selfish. And the way humanity is living now is not at all changing. It is same as it was started before. That is what the master said. So this way of humanity is living a life of selfishness, and what we are doing through Theosophy, we are making aware to ourselves that one is selfish. Be aware that you are selfish. But on the contrary, we are selfish, but we hide it very carefully. And we hide it very carefully, and we conform to the society, pattern of society, which is again selfish. And that has become our habit. So humanity follows selfish pattern. The Theosophy teaches human regeneration has to take place at this individual level. This habit needs to be changed. So the selfish mind is very cunning. Even if we are meditating, we never avoid to hurt other cunningly, especially cheating genes are more in male than in the female. Even males are meditating. They are more sharp and cheating others than in the female. So more harm and more dominating male society. We see either it is openly selfish or it takes many forms. This is what, if we understand, then our journey becomes from selfishness to gradually unselfishness. This is very nicely explained in Theosophy. We pass through 3 pages: dharana, dhyana, samadhi. So the first is concentration, and just be concentrate on what? On your breathing, on your sensations, on your thoughts which are coming in your mind. If we are just aware, that awareness is focusing our attention to our physical, emotional, and mental bodies. And that focusing attention itself changes us unknowingly. We never even go for the change, but we just observing. And then that is the first phase of, you can say, meditation. Then we gradually lift to the state of meditation, what we call. This meditation, what we call in Theosophy, is self-reflection. And this self-reflection, self-observation, self-examination, this is the second stage. That is what we call meditation stage. It is a self-reflection state. From focusing attention on our own selfish behaviors, we are changing to the self-reflection. And through this self-reflection, we reach to that samadhi level. And this is what the H.P. Blavatsky in Voice of the Silence, that each one passes through 3 pages. The first is the ignorance. We don't know much about what is meditation. We are completely ignorant in the first page. And in the second phase, that is the hall of learning, we learn that so and so thoughts are my selfish thoughts, so and so feelings are my selfish feelings, and so I am unable to
concentrate because of my mind which is conditioned. This all goes in the second phase, that is second hall of learning. And gradually we enter to that wisdom that this learning process, learning mind takes us to be silent, quiet, then we become gentle, then we become humble. See, these three phases, hall 1, hall 2, hall 3, in the hall 1, when we start meditation, we become day by day humble. Then when we enter into the hall 2nd, we become humbler. And finally, when we reach to the 3rd wisdom stage, we become humblest. So these are the 3 stages which we pass. And that is what nobody can teach. And Theosophy never teaches meditation. Only we sit together. We believe in the synergy. Because when the human consciousness is one, whatever we add into the human consciousness, that is distributed to all. That is the significance of meditation. Both, all the 3 speakers, they put the theosophical teaching before us. Now it is our responsibility. Dhyana is our responsibility of self-reflection. That is what we can start with. Thank you very much. Chandrasekhar ji asking the question. Yeah. I think I have not elaborated much, but it is Yes, what yes, we sir. have to remember. I can Thank you. understand. I can. Yeah. Thank you. Yes, Pritam ji, you wanted to add something to this question. Please add. Yes. What Shinja sir told, it's that is the main thing. Actually, meditation is we have to do alone. That is very important. And initially stages, no one knows how to do or how not to do. So don't know anything. That time you have to teach. Nowadays, everywhere in India or other places also, meditation classes are there. They are teaching meditation, offline, online. But how you have to take that meditation, that also matters. In group meditation, in Theosophy, it is not allowed. In group meditation, in Theosophy, it is not allowed. We have to do individually only. There are certain reasons are behind there, but we have to lock our aura when we're taking group meditations. We have to lock our aura. We have to not go with that flow. Everyone having different aura. Each person having different aura. It is anything, there is 2 perspectives are there, good and bad. So how you have to take? We have to see only better side, or there is also another side. So in group meditation, we have to take care. But if someone don't know anything about meditation, and my purpose of life is very clear, it is very clear, and I am doing that, my job. Okay. That's it. Ji, Archana, now go ahead. You're not there, so in between I took. Archana ji, Congratulations. Is there anyone who is speaking? no, sir, please go ahead. Should I? Okay. It's all right. I like that. First of all, let me congratulate for the subject Pritam ji has chosen today. And both in Marathi, KAUSTUBH ji, and in Hindi, SIMMI, no? That name. Sorry. Yeah. So you translated very nicely, and within the span of time, that is very particular. So today's meeting, that with the main speaker and the translators, that has gone in a very particular time. So I'm very happy with that also. Another thing is that this subject is in that way very illustrative. If you want to go deeper into that, then you have more perspectives to think about. It is a way of life. First, let us understand. And what way of our life is that we have to decide.
We cannot copy anyone. In the way Iyengar practiced the meditation, the same way we cannot do it. Of course, I have heard and I have read one example of Krishnaji, that while Krishnaji was suffering from cancer, he was advised to get the training of the meditation to be free from the pain. And Dr. Iyengar gave him the practice. How Krishnaji meditated, that is a different matter. But whatever the system is there, how we follow it, that is more important. If you have illustrations of meditation with different names and titles, we find that in the whole world. And in the Western world also, some gimmicks are going on. And due to that also, when we saw in the past, during the time of Madame Blavatsky, the people were in different kinds of misbeliefs, superstitions, and everything. So going beyond the mind's capacity, that becomes the part of the meditation. If you want to achieve something, then your action speaks more than your meditation. Your action is meditation. The way that you are doing something very with full conviction, with awareness, with everything, that becomes a meditative kind of activity. And you achieve the results. Now that becomes a part of the worldly understanding. Now, secondly, when you go deeper into yourself, what the second part of our title is also there, meditation in the inner life. If somebody's inner life is changing and he feels that, then he cannot explain in words. He understands in his own way. And if he is asked about that to illustrate certain things, then he cannot give the answer. Just like the words, it happens. So why it happens? That becomes the particular kind of proper understanding, proper practice, and doing the proper way that you have adopted, not by the persons outside that guided you, but you have adopted. That becomes a kind of meditation. And secondly, we learn something. In meditation, we have to learn. Why? How to learn? To unlearn and then to learn. Whatever is there in your mind, first you unlearn and then go beyond that. And that is the learning. In Theosophical Society, we are taught like that. Put aside everything. Whatever the memories are there, memory and meditation, if they go hand in hand, then it becomes very ridiculous. So we say that we are to be free from our thoughts in our meditation. It means thoughts are with the memories. So we have to be free from our thoughts, first of all. But being free from the thoughts means we are having the problems with our action, because in doing the action, you have to think also. So let us have that practice. And Theosophical Society teaches that in the best way. I have seen that in the writings of Madame Blavatsky also, in Dr. Annie Besant's writings also, even the particular study of the cases by Leadbeater sir, we find this kind of things when they go deeper into the meditation. How this book, small book at the feet of the master was written. That was written after the deeper meditation. So from the simple thing, you have to go to the subtler. From the harder things, you have to go to the lighter things. And from the lighter things, you have to go again to the subtler things. But when you are on the halfway, you will never succeed. You will feel, okay, it's your satisfaction. Don't worry about that. But that counts the years and years. When you are a boy, from boyhood to youth and from youth to old age, this process never stops. So our bent of mind should be like that. Study, understand, feel it, and don't compare. Feel it, find it out, and see that you are there at that particular peak. So that peak of the meditation gives you solace, peace, understanding, harmony, all the virtues. These are the simpler things. To be honest is a very simple way, but to cheat someone, that is, it requires a lot of energy.
what Shindeji was referring to, no? What just he has explained in the way that why somebody is feeling that he's cheating someone and still he makes the show that he is not doing something wrong. So in meditative mind, you have to be very illustrative. So that is enlightenment. Enlightenment is the word that is used for the meditation, but it has the different kinds of understanding with different people. We should not go into that. You cannot put the meditation in a way that gives a kind of fabric. And that fabric becomes very loose when you go with that. Somebody who says, though, I don't read newspaper, I don't watch TV, I don't go for any kind of outer communications, and then I sit in a single room, alone, totally alone, and I meditate. Okay, you can do. But doing that, what you feel, that is your own understanding. You cannot comply with any other kind of scheme, method, or any other thing. So this title, when you have chosen this, in the theosophic term, we have to look into that in a deeper way. In the second part, you explained it in a way that reflects our own duty. Duty in the way that as a human being, as a citizen of our great country, as a responsible person, as a theosophist, when we understand that this kind of work is ahead and I have to fulfill it, then with the meditative mind, I have to do it. And when you are with the meditative mind, you have the intuition to understand it in a different way. And that comes not from your study, not from your knowledge, not from your outer understanding, but it comes from within. So that is the real meditation. So I think the time is there in that way. I've explained in that way. So I congratulate all the three speakers. Thank you very much. सुप्रिया जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट करिए. नहीं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए. हाँ जी, हम बोलिए. लोग थियोसॉफिकल का वर्कशॉप किया है, उसमें से सब कुछ जो है ना वो साफ है. जो मेडिटेशन में जाता है ना, उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो माइंड में जो कुछ आता है ना, वो क्लियर होता है. और मेडिटेशन का क्या है, अपने आप को युगो में नहीं रखने का, दूसरों को हेल्प करने का, सेल्फ सर्विस करने का, और सब धर्म में एक ही समझने का. रिलीजन है वो डिफरेंट है, लेकिन एक ही रिलीजन है हम लोग. बस हम लोग है यानी आत्मा, यही सोचने का और सोल से जीने का. जिसका सोल क्लियर है वो सुकून से जी सकता है. ये मेरे हिसाब से है. क्यों अपने माइंड में जो कुछ दूसरों के लिए तिरस्कार वो कुछ नहीं रखना चाहिए. सब साफ रखना चाहिए. अपने से हेल्प करना चाहिए एक दूसरे को. और जो समाज है, समाज में दृढ़ता रखना चाहिए और एकता रखना चाहिए. एक निष्ठा से रहना चाहिए एक दूसरे के साथ. यही मेरा है. जी, थैंक यू सो मच. यही मेरा है. सुप्रिया जी फ्रॉम गोवा से हैं और वो हमारे साथ डेली स्वाध्याय के लिए, बुक रीडिंग के लिए रहती है. हाँ, सिमी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी क्या? और जी हाँ, बोलिए. उसके बाद अर्चना जी विल गो फॉर द. हाँ, तो मैं शिंदे जी की बातों से ये समझी जब उन्होंने ध्यान के बारे में बताया कि यू डू इनर रिफ्लेक्शन, आप अपने विचारों के ऊपर ध्यान दीजिए. तो एक ऐसा भी होता है, मेडिटेशन मीन्स अगर आप अपने विचारों पर पूरा दिन ध्यान रखेंगे तो आप मेडिटेशन में ही है, क्योंकि हर बार आप अपने मन को जो बुरा सोचता है उसको वापस अच्छाई की ओर लेकर आएंगे. दूसरा, हमारे पार्ट 1 में दिया गया है कि विश्व के साथ एकता. अपने मन में यह भावना उत्पन्न करें कि आप समस्त मानवता और समस्त जीवों से जुड़े हुए हैं. थियोसॉफी के अनुसार ध्यान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शांति नहीं है, बल्कि मानवता के प्रति करुणा. तो ऐसे भी मेडिटेशन है. एक संत है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, वो विश्व की मेडिटेशन है जिसमें हम पूरी पृथ्वी को आशीष करते हैं. तो ये आप ग्रुप में करें या अकेले करें,
फर्क नहीं पड़ता है। पर इससे जब आप विश्व को शांति करते हैं तो उस विश्व के अंदर आप भी है। उसमें बहुत सारी किसी ने बुरा किया है, आप उसको क्षमा करो। कोई दुखी है, आप उसे सुख दो। तो आप पूरे विश्व को वो आशीष दे रहे हैं। तो ये मेडिटेशन भी एक ऐसा है कि ये लोगों के लिए है, सबके लिए है, सबको शांति प्रदान करता है। बुद्ध ने भी बोला है, जब तक हर एक व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलेगा, मैं आपके लिए रुकूंगा। तो चाहे आप ग्रुप में करो, चाहे अकेले में करो, मेडिटेशन शांति प्रदान करता है। खाली आपकी भावना स्वच्छ होनी चाहिए कि आप सामने वाले के प्रति आपकी भावना अच्छी है और आप उसका दुख मिटाना चाहते हैं। आज का वातावरण जगत का ऐसे है कि अब जहां भी जाओ, एक 3 साल का बच्चा भी बोलता है मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ। आप क्या उसकी मदद नहीं करोगे? आप अंतर्गत ही रहोगे। बाहर तो आना ही है ना, अपने में शांति लाके बाहर तो देनी ही है। क्या बात। बस मेरा ये एक क्लैरिफिकेशन था। बहुत बढ़िया रहा आज के इस जो पूरा एक गुलदस्ता था हमारा मेडिटेशन और इनर प्रैक्टिस का, जिसमें मेरे ख्याल से सभी लोग अपने इनर सेल्फ में जाकर जो जो उन्होंने आज तक मेडिटेशन के बारे में सीखा है वो कहा। और थियोसॉफी तो यही कहती है, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स भी है कि हमें स्टडी करना है हर चीज को ज्यादा, और नए नए चीजों को या उसके अंदर के अर्थ को समझना है। तो उस मामले में हमें शिंदे जी ने, हर्षवर्धन जी ने, सभी लोगों ने अपना संपूर्ण थियोसॉफिकल ज्ञान दिया। प्रीतम जी ने ये सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से रखा। सिमी जी ने अपने तरीके से, क्योंकि वो एक तरह से प्राणिक हीलर हैं, तो उन्होंने अपने अध्ययन से ये कहा, और वाकई में बहुत ही आनंदप्रद रहा। नीता जी के बेटे का बर्थडे है और वो चाहती है कि हम सब उनको ब्लेस करें। यस। हम लोग कर ही रहे हैं, वो किसी कारणवश वीडियो नहीं कर पा रही है और सुन नहीं पा रही है अपने आप को। तो इसलिए मैं सबकी ओर से उनको कहता हूँ बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अर्चना जी, आपसे गुजारिश है कि समापन की ओर चलें। जी। प्रार्थना करते हैं। सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शांति। धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और सभी लोगों को एक बार फिर अलविदा, और मिलते हैं अगले मंगलवार एक नए विषय और एक नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू ऑल। थैंक यू। बाय।